फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and a very warm welcome to all our viewers who are watching the Cricket Next YouTube channel. India versus England, 4th Test match in Ranchi, day 4, and we are here at the lunch break now. A good situation for India to be in, although the proceedings have not yet been completed because 74 runs are required. 74 more runs are required. India is 3 down. They have 7 wickets in their hands. In form, Rohit Jaiswal are out. Rajat Patidar again continuing his poor form. After his debut, he got out on a duck. And as I said, India needs 74 more runs from here. And can, as a thumb says, can England pull off a miracle in Ranchi or not? Can they take some quick wickets in the second session, put some pressure on the Indian team, and go to Dharamshala to well? If it does happen, it will make a great test match for all the viewers. Obviously, a sad test match for the Indian fans, but if you're a cricket fan, you're going to love this test match if this turnaround happens. Well, to talk more about this test match, I have with me Jamie Alter and Taus Rizvi. Hi, Jamie. Hi, Taus. Jamie, is this match far from over? Can we think that this match is in India's kitty? I would like to believe it's in India's kitty because the good work done yesterday to keep that target to just 192 instead of 230, 240 and beyond. It did, to my mind, put the team in a confidence position. 8 ओवर के अंदर स्टंप से पहले आपने 40 रन मारे और आज का जो 84 रन की पार्टनरशिप थी, I read somewhere on Twitter, it's India's highest opening stand in the 4th innings of a test match since 2008. मतलब इतने साल के बाद आपने, और केवल 84, पर उस केवल 84 ने जो आधे रन, almost half the runs निकाल दिए. I think that is where the match should be set, right? But like I tweeted this morning in the first day, in the first over, कि जिस cricket tragic ने Barbados 97, Jamaica 2002, Mumbai 2006, Durban 2006, Galle 2015, Cape Town 2018, Birmingham 2018, Southampton 2018 और हैदराबाद 2024 यानी कि 3 हफ्ते पहले देखा है, उसको थोड़ा डाउट तो रहता है. So yes, 74 रन ही है, but while I'm saying India should win, I want to ask you guys and our viewers, जडेजा और गिल इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं यार? 74 रन तो हैं. Why have they gone into a shell? Because these guys have got out the way these guys have got out यार. टर्न हो रहा है, ये इनको लग रहा है कि ये भी ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा's dismissal was funniest. I was just looking at it again and again. Funniest dismissal because उसने पहले ही सोच लिया था मैं स्टेप आउट करके दूंगा इसको. और जब आप स्टेप आउट करते हो भाई, आप लेफ्ट हैंड स्पिनर को कन्विंसिंगली स्टेप आउट नहीं कर सकते बिकॉज द बॉल इज गोइंग अवे और आपको पता है कि बॉल शूट होकर बाहर निकलेगा, तो आप कंफ्यूज लग रहे हो. आपको या तो अटैक करना, आप जगह पर खड़े रह के खेलो. अब दूसरा यशस्वी जायसवाल के विकेट से मुझे एक ये याद आया, ये कि आई वाज प्लेइंग एक कांगालिंग मैच, वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन. आई वाज प्लेइंग एट नंबर 3, नंबर 4, सेट हो गया था और यही ऑफ स्पिनर आया था, एक ऑफ स्पिनर. और ऑफ स्पिनर को मैंने गलती की यार, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मारू मैं कवर्स के ऊपर से, बट बॉल वाज टर्निंग और ये वही हुआ. तो आपको कॉशियस रहना है. और जो रूट इज नॉट अ स्मॉल प्लेयर है यार, आप उसको रिस्पेक्ट देना ही है. कितने बड़े कितना भी बड़ा बैट्समैन हो, वो पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, ही इज मोर देन अ पार्ट टाइम बॉलर. तो आप ये टर्निंग विकेट पे आप लोअर किया, जो रूट ने लोअर किया, थोड़ा रिस्पेक्ट देता यशस्वी जायसवाल चला जाता. पतिदार, I don't know what's happening. थोड़ा sweep सीखना पड़े. So a lot of things happened. That's why they might have gone under shell. क्योंकि I mean आपने स्टार्ट जबरदस्त किया, रन्स क्विकली आए सेकेंड डे पे. शुरुआत में हाफ ऑफ द सेशन में आपके फर्स्ट के रन जबरदस्त था, क्विक रहा है, तो थॉट आया होगा यार अब हम खत्म करेंगे मैच. बट खत्म करने का भी एक तरीका होता है, रिस्की खत्म नहीं कर सकते हो. तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि these guys are a bit scared. You know, the ball is turning. क्या हो सकता है, या तो हमें लंच तक विकेट संभाल के चलना है, क्योंकि हमको हमारे इस पे भरोसा नहीं यार, विकेट गिर गई तो और टेंशन में आ जाएंगे. तो लंच सुकून में बीते, खाना हजम हो जाए अच्छे से, खाना एंजॉय करे, इसलिए उन्होंने शेल में चले गए. आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, बट देन आई एम अगेंस्ट द शॉट्स दैट दीस गाइस प्लेड. टेरिबल.
Absolutely, especially the way Rohit Sharma got out. I mean, we were talking yesterday that he shouldn't go into his shell, पर वो shell और crease दोनों के बाहर आ गए रोहित शर्मा, वो थोड़ा उस साइड चले गए स्पेक्ट्रम के. But Jamie, Rajat Patidar here, this is a question we have been asking amongst ourselves for the last what 20 days. You have been pretty clear, you have been pretty vocal about the fact that even though India wins, you'll drop him for the likes of Sundar or even Padigal for that matter. Do you think this is the final nail in the coffin for Patidar? See, if a player's first 5 or 6 innings were an indication of where his career would end up, फिर तो यार Marvin Atapattu would never have got to 5,500 runs. The guy had 5 ducks in his first 6 innings, right? So you can never say where someone is going to ever end up. But right now, given the fact कि केएल राहुल कहीं ना कहीं तो आएंगे, चलो मान के चलते हैं कि धर्मशाला टेस्ट मैच में केएल राहुल नहीं आएंगे. Like I said, I still wouldn't give it to Devdutt Padikkal right now because I think he has to fit in a very specific role. या तो वो ओपन करेंगे या वो 3 पे खेलेंगे. क्या वो 4 पे खेल सकते हैं? हाँ. क्या वो फिलहाल अभी 4 के लिए suited है? I don't think so. So I would perhaps like to see somebody else play. I think अगर अगला मैच ना 3-4 दिन के बाद होता, they might have said, let's not play Patidar. But knowing Rahul Dravid's thought process, अभी 7 दिन का गैप तो वैसे ही था, इस मैच के चलते आपको 8 दिन का गैप मिलेगा. They might just say, you know what, let's watch Rajat a bit more. Let's give him that break, So while I don't think in the current mindset के बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूं, because he's not looked convincing ever since his first innings. Okay, one unlucky dismissal, but आज it was almost like he was a veteran of 65 test matches where he'd seen this choke collapse so many times. यार आप यंगस्टर तो नहीं हो, आप जायसवाल नहीं हो, but फिर भी आप एक youngish player हो जिसके ऊपर कोई baggage नहीं है. You perhaps should have played it with a bit more positive intent. The way he stabbed at that ball, the way that Ollie Pope took the catch, it's just like second duck of the series. Just right now, his mind space, his footwork does not seem to be in that league, which is required to play in very tough conditions on challenging wickets against an England team that is really going to keep on surprising you. So no, for me right now, Patidar should not play the fifth test match in Dharamshala. Taus, will you play Patidar in the 5th test match? Honestly, I found him to be struggling against, or maybe lacks confidence against spinners, because he's the timer of the ball again. I mean, he's a sweet timer of the ball. He likes the ball to come onto his bat, और अगर नहीं आता है और बॉल थोड़ा स्लो हो जाता है तो बौखला जाता है, और इसकी वजह से बिकॉज इसको खेलना ही नहीं आता है जिस तरह से स्पिनर्स को खेलना चाहिए. दिस बॉल कुड हैव बीन स्वेप्ट अवे, क्योंकि आप ऑफ स्पिनर डाल रहे हो, ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे हो. अगर आप एक कॉन्फिडेंट या 20, 25, 30 रन बना लिए होते और अगर आपको स्वीप खेलना आता होता तो ये शॉट स्वीप खेलने के लायक था. ये आपको लाइन के बाहर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाके एक फ्रंट फुट को एकदम ही फुल फॉरवर्ड करके आपके सडनली एक बाउंस ग्लव हैंडल पे लग के या टॉप एज पे लग के कैच जाना, ऐसा नहीं. अगर आपको आप सेट होते, कॉन्फिडेंट होता, आपके पास रन होते, पिछले मैच से रन आए होते कि आपने बैक टू बैक 0 नहीं किए होते तो आप ये शॉट नहीं खेलते. या तो आप उसको बैक फुट पे आके ये कर देते ऑन दी ऑन, या तो आप स्वीप करते, बट कुछ नहीं ऐसा. बट आई वुड लाइक टू से जेमी भाई, मुझे लगता क्यों है कि राहुल द्रविड़ अगला चांस नहीं देंगे इसको. क्यों? क्योंकि राहुल द्रविड़ के पास अकेले से नहीं है. आपने ये मैच में देखा, आकाशदीप को खिलाया उन्होंने. हम सोच रहे थे कि यार आकाशदीप नहीं आएगा, ही विल गो विद द टिपिकल सीनियरिटी, 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं मुकेश कुमार, तो लेट्स गो विद मुकेश कुमार अगेन. मुझे लगता है वो ब्रेक किया. अक्षर पटेल जो एक सेट फॉर्मेट लेके चल रहे थे इतने टाइम से, आपने कुलदीप यादव को आपने जंप इन करा, ऑल्दो ही डिजर्व्ड इट, ही शुड हैव बीन देयर. तो वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन था, आई मीन राहुल द्रविड़ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से. तो आई थिंक राहुल द्रविड़ इज नॉट अलोन द डिसीजन मेकर. यहाँ पर और भी लोग हैं जो दबाव बना सकते हैं राहुल द्रविड़ पे, तो शायद वो दबाव बने. तो अगर 5वें टेस्ट मैच में बैट्समैन कौन है पीछे बैकअप करने के लिए या रजत को रिप्लेस करने के लिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस कि यार कौन खेला है, किसको आइडिया, कौन एक्सपीरियंस है. एटलीस्ट इसको 3 इनिंग्स का एक्सपीरियंस तो है, 0-0-0, तो ही विल बी मोर एक्सपीरियंस. बट कौन बैटिंग कर चुका है टॉप ऑर्डर में, वो भी एक सवाल उठता है कि कौन कर सकता है.
तो इसमें क्वेश्चन मार्क्स, अनलेस दे गेट अ गुड बैट्समैन, he won't be replaced, but chances are higher that he could be replaced in the next test match. Yeah, fair enough. Batter भी आपको देखना है उसकी जगह कौन, but there's as again many people, not even Jimmy, many people have said that you can play a likes of Washington Sundar there because he'll also give you bowling, be it Washington Sundar or Akshar Patel. एक मुझे सवाल नहीं इस पे, कनफ देखिए, अगर आप एकदम ही एक्सट्रीम आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे कि आप टॉप ऑर्डर बना देंगे वॉशिंगटन सुंदर को, आके आप बैटिंग भी अच्छा करते हो, वो बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो बोलेंगे यार अब ऐसा आने लगा है कि एकदम आउट ऑफ टर्न क्यों आ रहा है कि यार आप बॉलर को बैटर बना रहे हो, फिर हम जो इतना ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, उनका कहाँ चल जाएगा? तो फेयरनेस अनफेयरनेस का सवाल आ जाएगा उसमें, और बाकी सब लोगों के इसमें डाउट्स हो जाएगा। तो क्रिकेट वैसा नहीं होता कि यार आप लोअर ऑर्डर बैट्समैन या ये कितना भी अच्छा बैटिंग किया, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में कहाँ बैटिंग किया? एक्सपेरिमेंट का बात अलग है कि जैसे आपने श्रीनाथ को नंबर 3 पे एक्सपेरिमेंट किया कि यार वो पिंच हिटर है, कर सकता है ये वो, बट यहाँ पर एकदम ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट कर दोगे आप कि यार बाकी बैट्समैन यार हम क्या कर रहे हैं यार, फिर हमको भी कुछ आउट ऑफ द वे करना चाहिए, बॉक्स समथिंग डू समथिंग आउट ऑफ द वे। तो मुझे लगता नहीं वो ऐसा रिस्क लेंगे कि यार बाकी लोग भी हार्म हो जाए, साइकोलॉजिकली इफेक्ट करे। यार आप एक लोअर बॉर्डर बैट्समैन को आप बल्लेबाज बना रहे हो, आपका इतना डेस्परेट सिचुएशन लग रहा है, वो इंग्लैंड के भी एडवांटेज में होगा। तो लेट्स मेक हिम इंजर्ड कर दो इसको, या बोल दो कि यार आप फिट नहीं हो, किसी और को रिप्लेस कर दो, कितना टाइम लगेगा? Yeah, no, fair enough. Jamie, what does England need to do now? You have you have 7 wickets that you need to take. 74 runs are required. Will you go attacking with the field के wickets तो चाहिए, और will you also defend runs? ये balance कैसे आएगा एक fielding as Ben Stokes? What should he do in the next session? I don't think they really have to do too much else because like I said, Jadeja और गिल अभी उस शेल में गए हैं, ठीक है। ये जो कितने 74 रन है, ये शायद 150 लग रहे होंगे, 130 लग रहे होंगे। Both of them, especially Jadeja, they've been in these situations. क्या करना है as Indian batsmen in a pretty straightforward chase? They should know. I just think somewhat I thought maybe the lack of close-in catchers initially was a bit surprising after Rohit Sharma got out. But then you see what Ben Stokes is trying to do is saying, come take singles, right? And after they take a couple singles, then he comes and he blocks those singles. So it's actually very, very smart field placing, right? So I don't think he has to try much more. I still think I think Ollie Robinson ne ab tak over nahi dala. I don't think he's going to go to him. Bring Anderson, to my mind, every 9-10 overs. Just bring Anderson, Baki, I think अगर यहाँ से England team जीत जाएगी, तो it's going to be the doubt that Hartley and especially Bashir are going to put. Especially Bashir, lovely action, lovely that almost here, like Tosberger, no, the snap of the fingers when he bowls, that off break. I don't think Pace will have a big say. That's why I said एंडरसन को यहां वहां लाओ। अगर जो 3 विकेट गिरते हैं अगले 40 मिनट में, फिर आप एंडरसन को ला सकते हो। बट राइट नाउ आई थिंक देयर बेस्ट बेट इज कीप रोटेटिंग द फील्ड्स, लीव इट, डोंट गो अटैकिंग, लीव इट अ बिट डिफेंसिव, ताकि जडेजा और गिल, बिकॉज डॉट बॉल के प्रेशर में भाई पिछले मेरे ख्याल से जब से गिल आउट, जब से जयसवाल रोहित आउट हुए हैं, have they added even 25 runs? I don't think so, right? So probably I think they've added like 25, 30 runs in, I don't know, 15, 16 overs maybe. So shell pe gaye wo. Use that. Okay, you guys want to play safe? I'm Ben Stokes. I'm assuming you now want to take singles. Le lo ek single, put mid on, mid off back, let them rotate a few, then bring them in. Acha, ab hum nahi denge. You have to play mind games. Because 74 run, bhai, 74 run zyada nahi hai. So I just think rotate the field, bowl those 2 spinners, and see what happens. Absolutely, but Jamie, what do you think is the reason of them going into a shell? Jadeja, we have seen there are times we have seen him going into a shell. Gill ka natural game is not this. He is someone who looks for runs, at least for singles or doubles, not if not the boundaries. What do you think? Is it the scoreboard pressure, just the scoreboard pressure? कि यार 80 runs, 90 odd runs जब रोहित out हुए कि वो और मारने हैं, and I don't know, we don't know if it will happen or not, या कितनी जल्दी होगा, we can't lose wickets. Is it the pressure
What is the reason that two of the most experienced, Gill is also a very experienced campaigner now, and Jadeja, we all know how long he has been playing, have gone into a shell in this situation? Probably उस सिचुएशन में कनव दे जस्ट वांटेड टू प्ले फॉर द ब्रेक. ठीक है, ब्रेक खेलेंगे, अंदर जाएंगे, चाहे कुछ खाए पिए नहाए, कुछ देखे, द्रविड कोच रोहित कुछ बात करे, देर प्रॉब्लम लाइक भैया अब बस जितने भी 15-16 ओवर है वो देख लेंगे, राइट? Again, it's the doubt that the pitch and the lengths of the two spinners are creating, the line and length, that is what is causing them, right? बशीर ने बेहतरीन गेंदबाजी करी पहली इनिंग्स में, बोल सम गुड ओवर्स. ही डिडंट बोल hit me balls, right? But his maiden count was actually very low given the number of overs he bowled. That means वो आपको single दे रहे हैं, right? In conditions में he's still bowling this, he's giving you the odd single, but they didn't seem like they wanted to take it. What do we do? Do we get off strike? जडेजा कुछ पता नहीं 70-75 टेस्ट मैच खेल चुका होगा, I don't know, I'm not sure, but a lot. Does he want to get to the other end and let Gill do it? जो like you said वो थोड़े shot maker है, or does he, as the senior player, does he want to take on the responsibility? I'm not sure what इन दोनों का internal आपसी में dialogue हुआ होगा. I think you're probably, and for the better Kanav, you're probably going to see a more positive approach in the post lunch session, because they've gone inside, they've had the talks, they've been given the message. अब देखना है क्या होगा. रही बात गिल की, as you said, he likes to play shots, right? But he's just seen 3 batsmen play shots and get out. तो उस लड़के के मन में more than Jadeja's बहुत doubts हैं. So I'm very keen to see. I would love to see Gill get 48, 59, 60 not out and finish the match, because Lord knows the guy needs it more than anyone else. But it's the pressure, it's the familiarity, all these names that I listed of the chokes. Jadeja was probably there in 4 or 5 of them, right? So it's all these factors, and hats off to England for keeping this match going on like this year. See, right now, Yeah. I think Yeah, these guys will operate with off Bashir and Hartley, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही convincing लग रहे हैं और दोनों ने ही विकेट्स निकाले हैं और बीच बीच में रूट आएंगे. तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी टीम इंडिया को करना है कि भाई दे हैव टू डिसाइड. शेल में गए ना तो वो तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेंगे, और वो जिस तरह से हमको दिखाई कि यार these guys are like on their mind right now and playing on their mind. The only way to release pressure. अच्छा, वो वहां तक शेल में इसलिए थे यार, लंच में तक विकेट अपने को बचानी, रिलैक्स करें. फिर इसके बाद नाउ द वे शुड बी कि भाई जडेजा एंड शुभमन गिल तो अटैक कर शोएब बशीर और जो रूट को, क्योंकि आपका बॉल अंदर आ रहा है, आपको चांसेस है वहां पर मारने का, आपके लिए डीप रखेंगे. तो आप अटैक करने की कोशिश करो डीप के ऊपर, मतलब डोंट प्ले एरियल शॉट्स बट गो फॉर हिम, गो आफ्टर हिम. जडेजा प्ले टॉम हार्टली, और टॉम हार्टली आपको जडेजा को अगर टॉम हार्टली ने स्लॉट में दिया देन इट कैन गो ओवर डीप मिड विकेट बाउंड्री. दीज गाइज नो, आई मीन दिस गाय हैज गॉट पावर. तो आप अगर वैसा गेम प्लान करके खेल रहे हो तो आपके पास चांसेस है कि आप क्विक रन्स पहुंचोगे, क्योंकि रन्स आप उधर खड़े रहोगे ना तो रन्स अपने आप क्विक आएंगे. एंड द वे दीज गाइज स्टार्टेड टुडेज मॉर्निंग, रन्स क्विक आ रहे थे, कल भी रन्स क्विक आ रहे. तो इट्स अबाउट स्टेइंग देयर एट द विकेट. तो इनके पास एडवांटेज ये है कि आपके पास 7 और बैट्समैन है खेलने के लिए, 2 माइनस कर लीजिए, मगर आपके ध्रुव जुरेल है, आपका सरफराज है, ये दोनों एस्टैब्लिश प्लेयर है. फिर बाकी आप 2 बैट्समैन ऑलरेडी अलग खेल रहे. तो आप शेल में जाने की कोशिश मत करो, आप खड़े रहोगे, रन्स बनाओगे, गो फॉर द रन्स, डोंट गो फॉर रिस्की रन्स, डोंट गो फॉर द रिस्की शॉट जिसमें आप हाफ हार्टेड माइंड या 50% कन्विंस हो. आप कन्विंस हो 100% जाएगा, गो फॉर दैट शॉट. आप 80-90% कन्विंस हो कि आप बोलोगे कि यार लक पे खेलोगे, तो वो एरर, मार्जिन ऑफ एरर नहीं देना है आपको, मगर आएगा उसमें फैक्टर ये आएगा कि भाई एज लगेगा, यहाँ पर जाएगा, इनसाइड एज लगेगा. मगर जैसे बेन स्टोक्स आउट हुआ, व्हाट एन अनफॉर्चुनेट डिसमिसल इट वाज, वैसे ही. बट आपको मतलब मोस्टली 100 एरर फ्री गेम खेलना है, बट देन एरर फ्री के साथ साथ अटैक करना है. तो टॉम हार्टली शुड टेक ऑन, जडेजा शुड टेक ऑन टॉम हार्टली, शुभमन गिल शुड गो फॉर आफ्टर जो रूट एंड Bashir. Absolutely, and this is a very obviously a very tough task, especially when you go into a shell and you want to cross the line. But Jamie, I read a tweet a while back somewhere, and they mentioned what you were saying, that looks like this team is planning to gift a combo version of Barbados 97 and Chennai 99 to the current generation.
I mean, you guys know this inside out. I was not even born at that time, so I don't know the matches that you are talking about. But I know that 2003 and 2023 World Cup final, now both the generations compare, and we can also get that same kind of loss heartbreak again. But hopefully, we'll not. Jamie, your thoughts on the pitch? Do you think the pitch has deteriorated enough for the English bowlers to now take advantage, in the sense that day 4 है, डे 1 पे हमने क्रैक्स देखे थे, डे 4 पे और थोड़े क्रैक्स बढ़ गए हैं? Do you think as of now the pitch is perfect for bowling, or do you think that Indian batters जो पिच है वो इंडियन बैटर्स के लिए सूटेड है, पिच में कोई दिक्कत नहीं है अभी? नहीं, ये तो नहीं कहूंगा कि करब पिच में दिक्कत नहीं है, पर इट्स डेफिनेटली नॉट डिटेरियोरेट टू द एक्सटेंट वेयर देयर शुड बी डाउट कि अगली बॉल क्या वो बेन स्टोक्स लेवल की रहेगी. ऑफ कोर्स बेन फोक्स got two balls in this match with which stayed really low, but it's not one of those matches like we saw in Nagpur 2015 or Pune 2017, which the ICC then slapped with a poor rating. It's tough. There are cracks, no doubt hai, but it's still not. It's not a bad wicket. Bad wicket मेरे हिसाब से वो है यार जहाँ पे बॉल उछल रही है, बैट्समैन को खतरा है, गिल पे लग रही है. This is a tough wicket. It's not a square turner, and it's just like I said, it's just got the right amount. If Bashir continues to snap his fingers when he bowls, especially from around the stumps, and he tries to bring the ball in, एक और catcher लगा दो under the helmet यहाँ वहाँ. Ollie Pope is one of the finest catches under the helmet going around, चाहे वो silly point पे हो या forward short leg पे हो या backward square leg पे हो. Maybe put in someone else and just see what happens, because we've seen यार हमारे बैट्समैन, और मतलब मैं तो गिल से आगे के बैट्समैन के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत सीनियर प्लेयर्स, पुजारा, रहाणे, even Rohit at times, they've often been on similar tracks in the last 5-6 years. They've been undone by the Nathan Lyon ball that suddenly hits a crack and spits, while coming into you. So maybe Ben Stokes can employ one more catcher. So it's a very good pitch for the spinners. It's a pitch which puts doubts in the minds of the best of batsmen. But like I said, यहाँ से 74 रन जो हैं, India should wrap this up. Yeah, Taus, if you have to pick any one England bowler, you talk about all the bowlers, Root, Beed, Hartley, Beed, Bashir. But if you have to pick any one England bowler which you think will be a big threat for the Indian team, कि यार इसका ओवर तुम शेल में डाल के निकाल दो, because he can take your wickets and you can score on the other bowlers. शेल में तो आई एम स्कैर्ड ऑफ टॉम हार्टली यार, क्योंकि मोस्टली हमारे पास राइट हैंडर्स है यार. So that is one factor, you never know. Tom Hartley might, that dismissal of Rohit Sharma is still funny यार. I mean, वो दिमाग में घूम रहा है यार, वो step out करके वो बॉल इतना uncomfortable situation में आने की जरूरत ही नहीं थी. So Tom Hartley, it's Tom Hartley for me right now. But the ball is turning square यार. चौथे दिन पे आप expect करोगे कि यार बॉल ऐसा टर्न होगा, unless आप convince नहीं हो कि यार ये बॉल मेरे बैट के नीचे ही आने वाला है, तो ही step out करो. But that ball, sorry, are you surprised that he stepped out, or he stepped out to defend? I would have been happier had he stepped out and gone for the shot. He stepped out only to defend. That I found that strange. Yeah. In fact, I mean, this was like intentional. वो पहले से ही प्लान बना लिया था, अब मैं मारने वाला हूँ. Unless वो flight डाले. This wasn't even a flight. This was short pitched. तो short pitch पे आप प्लान नहीं बनाओगे जब तक कि प्लान कॉन्फिडेंस कब आता है स्टेप आउट करने का, जब ऐसा लगता है यार 3-4 बॉल अच्छा फ्लाइट दे चुका है, अभी अगला बॉल एक और फ्लाइट मारेगा तो मैं दे दूंगा इसको. तो वो चक्कर में ये बंदा फंस गया. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू बोल यार, टॉम हार्टली, क्रेडिट टू हिम. सो आई एम स्केयर्ड ऑफ टॉम हार्टली बिकॉज़ वी हैव राइट हैंडर्स, बट देन उसका सॉल्यूशन है हमारे पास. सरफराज खान कैन प्ले गुड स्वीप्स. टॉम हार्टली और शोएब बशीर काम एनीवे, कोई भी आ जाए फोड़ देगा, स्वीप करेगा. You guys, on that note, you guys think that Sarfaraz should have walked out again, or no? It's a tough situation. Send the senior pro. Yeah, I mean, they have sent Jadeja in a way relaxed situation कि यार आप चले जाओ, ये तो tough situation है, there is pressure situation. तो I would have expected India to do the same कि Jadeja को ही भेजो. Let's have the cushion of Sarfaraz.
at the back you have a proper batter after Jadeja, but they would have obviously sent more experience in this. मुझे लगता है Yeah, ये बैक टू बैक विकेट्स किया ना, इसलिए जडेजा को भेजा है. अगर मैच थोड़ा करीब होता या थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल में होता, सो दे वुड हैव सेंट दिस गाय सरफराज खान. क्योंकि आपने देखा सरफराज खान कितना भी आप कह लो कि यार लॉन्गर मल्टी फॉर्मेट प्लेयर है, वो रिस्की शॉट्स खेल के ही रन बनाता है. अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, वो एरियल शॉट्स ही खेलता है. आपने कितना कवर ड्राइव या थ्रू द ग्राउंड फ्लिक्स या ऑन ड्राइव देखेंगे या स्ट्रेट ड्राइव देखेंगे, तो सरफराज खान मैच जिताएगा, मगर रिस्की खेल के ही जिताएगा. क्योंकि आप मतलब आप तो जडेजा इज मोर डिपेंडेबल इफ यू वांट टू सेव विकेट्स, इफ यू वांट टू एंड द लंच सेशन और टी सेशन on a on a no without any further loss or damage to the team's fall of wickets. So yeah, that might have been a strategy. So, but then where? yeah. Sorry, no, I'm just keen because I think our viewers will also want to weigh in on this. जब तक हमारा जो अब तक 5 पे खेलते आया है, फर्स्ट सर्विस श्रेयस अय्यर, अब वो नहीं है, उसके बीच केएल राहुल है. मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि बहुत जल्द विराट कोहली आएंगे और वापस 4 पे खेलेंगे. Until that Rishabh Pant name is added to the squad, right? जो कि match winner रहा. How I'm missing him right now in the situation. Should the Indian team then say कि innings खतरे में हो, innings solid platform पे हो, Jadeja should then be our number 5? Because my question is, आप किसी और को 5 पे include करते हो, फिर उनको number 5 पे slot करते हो, जरा सा मैच फंस गया तो आप बोलते हो बेटा तू कम रहे, विल गो. Why not just have Jadeja be your number 5 on a long term basis until you're proper number 5? I get it, you want to bring the senior player or the fighter or the champion player in a tough situation, लेकिन कब तक होगा वो? So I'm okay with him just being, because he's a damn good batsman. बहुत बार he saved the team. So why not just have him at number 5 until your proper number 5 comes back? What do you guys think? Exactly. क्योंकि देखिए आप अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है सरफराज पे. दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस गाय हैज बीन not been given that opportunity to bat at the number that he should have been batted on. So that is where the confidence lacks. और इसलिए मुझे वो डाउट हो रहा है फ्यूचर में क्या पोजीशन रहेगा. जडेजा तो ठीक है, आई मीन once पंत comes back or anybody comes back, Jadeja will remain at his position. But then सरफराज का it's creating a lot of doubt कि यार whether is he a permanent place or just a stopgap, win those matches in India, and then once you go to England or Australia, you won't find him anywhere close to the playing level. It's true. Absolutely. Yeah, and I think Jadeja is coming at number 5 just because we have a youngster at that position. KL Rahul जब आएंगे तो I believe that number 5 will be KL Rahul's position, because number 4 will be Virat Kohli, and then when Rishabh Pant comes in, I think he'll come in as a pure batter, because आते ही वो टेस्ट मैच में कीपिंग नहीं करेंगे. It is a big ask. So if he keeps wickets, तो वो एक स्लॉट अगेन खाली हो गया. दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. बट इफ ही कम्स इन एज अ बैटर, आपको ये भी देखना है कि वो किसकी जगह पे आएंगे. राहुल की जगह पे उनको लाना पड़ेगा. तो दैट विल बी प्रोबेबली फॉर मी मोर कंफ्यूजिंग. सरफराज को यंगस्टर नहीं कहो यार कनफ. I would 3 seasons back to back. He should be a veteran now, and he should know how to save wickets, draw matches. Also, I mean, you can't keep on like winning matches all the time. टेस्ट क्रिकेट में ये सिचुएशन भी आता है जहां पर आपको डिफेंसिव मोड में भी जाना पड़ता है और अटैक करना हो सिचुएशन वहां पर. वो प्योरिटी मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक जनरल बात. आई थिंक दिस शुड गो टू सरफराज खान आल्सो. दिस मैचेस दैट यू आर नॉट अ यंगस्टर, यू आर अ वेटरन नाउ. 26 इज नॉट अ, आई मीन दैट्स द एज वेयर क्रिकेटर बिकम्स अ वेटरन ऑलमोस्ट. 30 साल का वेटरन जरूरी नहीं. यू हैव स्कोर्ड रन्स, यू नो हाउ टू सेव मैचेस, यू नो हाउ टू विन मैचेस. So I think you should tell रोहित शर्मा कि भाई I can save matches. अब जडेजा को क्यों भेज रहे हो? मतलब in a good way, in a very ये आप भरोसा रखो मुझ पे. और वो भरोसा कब आएगा? जब वो करंट सिचुएशन में लास्ट इनिंग में भरोसा आ सकता था अगर वो 100-200 बॉल खेल लेता तो. बट वो वेस्ट कर दी. And Tausba, I think youngster, the management thinks of anyone who has just come into the international cricket. वो in terms of cricket नहीं सोचते कि बहुत cricket खेला है. They think कि international cricket कितनी खेला है. And in terms of international cricket, he's very, very young. Just 2 test matches old. So they have more trust on Ravindra Jadeja. But we have some questions coming in, and even opinions. Sunny is saying, I would have preferred Sarfaraz, ask him to go make quick runs and release pressure from Gill and rest of the batters. This could have been one approach कि आप अपनी गेम खेलिए. Jamie, if you are Rahul Dravid or any
senior member of the team management, what will you tell these two batters now, Jadeja and Gill, during the lunch time? Do you tell them to be cautious? हाँ ठीक है, जैसे खेल रहे हैं आपको जैसे कंफर्टेबल आप वैसे खेलिए, or do you tell them कि at least one of you needs to score quick because अगर collapse हो गया we still have 74 runs? Yeah, I don't think it's as simple as saying to score quick, because we saw कि पिछली पारी में जडेजा ने score quick के नाम पे 12 गेंदों पे 2 छक्के मार के 12 बनाए और फिर आउट हो गए, right? So given my admiration for Ravindra Jadeja, and more than, forget me, who am I? The kind of performances that he's put in since 2018, when his batting has transformed so wonderfully. It was a strange innings, क्योंकि हम ऐसे इनिंग्स एक्सपेक्ट नहीं करते जडेजा से कि मैच दूर तक आपके हाथ में नहीं है. यू हैड टू रीजिग द बैटिंग लाइनअप, और आपने आके 12 में 12 बनाए, फिर आप बॉल को स्टैब करके आप शॉर्ट लेग पे कैच दे चुके हो. इफ यू टेल द सेम थिंग टू शुभमन गिल कि यू play slightly more attacking cricket, we don't know if it works off. I mean, then, like I said, Gill is 59 not out, walking off with a smile on his face. If it backfires, team की हालत खराब होगी, and then you've confused Shubman Gill, right? So I don't know exactly what Rahul Dravid would have said to them. I hope, Kanav, it's sort of on the lines of अपना natural game खेलो, just be positive. देखो, they've gone into a shell. While I found it somewhat alarming, like we discussed, probably इनका सोच था कि हम lunch break तक जाएंगे, then we'll recalibrate, we'll have our plans, we'll speak to whoever. They shouldn't come out and play the exact same way. Jadeja is what, 3 off 29. He cannot keep going to 6 off 54, 7 off 71. He's going to have to at some point show why he is, to my mind, the best all-rounder going around in these conditions, Ravindra Jadeja. So I'm not too concerned about him coming back and changing gears and also finishing not out. I'm a little worried about, like Tosbhai mentioned, the Hartley factor, the Bashir factor. How will Shubman Gill play? 18, 60, 65 गेंदे खेल चुका है लड़का. He's the one who now needs to. He's not the senior. The senior is, of course, Jadeja. But in this partnership, he's the senior player, and he needs to sort of fulfill that role now. Just don't do anything stupid. और ये जैसे कि मैंने कहा था, ये 74 रन हो जाएंगे पार यार. Absolutely. The match is about to start. Jamie, do you think we'll get a result in this session, or do you think we'll go into the third session also? I would be very surprised if it takes them more than 2 hours to get 74 runs. Even by the slowest test match standards आजकल 2 घंटे में 74 तो बन जाएंगे. Maybe a couple more hiccups, but India should win with at least 5 wickets remaining. Yeah. 5 wickets. Exactly. Tausbhai, your prediction for this session? Do you think this is the session India will take away the game, or can you see England pull off a miracle here? थर्ड सेशन में गेम गया तो मतलब हम घुस गए, हम बहुत ट्रबल कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा खत्म हो जाएगा. आई मीन सेकंड सेशन में ही रिजल्ट आना है ये सेशन में, बिकॉज आई मीन 74 इज, आई मीन इट्स नॉट अ बिग टोटल, although it's looking big because of the wickets that have gone and the ball is turning. They're looking threatening, the bowlers. But then आपको करना क्या? What is that saying? Do or die. Do or die thing is over in this session. Otherwise, you're gone. I mean, you will die. You won't survive. So you have to do it in this bloody session. Otherwise, you're gone. I mean, expect करो 2 all. But I think it's 3-1 यार. Come on. इतना तो भरोसा होना चाहिए बल्लेबाजों पर. Absolutely. This should be an easy task, considering that we have informed batters. We have good enough batters to at least score 74 runs in this session itself. Well, Shubman Gill is batting and Tom Hartley is starting the proceedings in the second session. We'll have to wait and see what happens in this session. I would like to add, but what a comeback, na? What a comeback in this. I missed the yesterday's last 2 days session, Jamie Bhai and Kanu. What a comeback that India made, yeah. What a comeback in this test match, the way it went. So it's a beautiful, entertaining game. मजा आ गया. बिल्कुल. Absolutely. Then this is what Test cricket is. I mean, you never know until the day 5 or the final day of the match, whatever that is, comes in. You never know which team is going to win, and this is what makes this format beautiful. Well, thank you so much, Jamie. Thank you so much, Tausbhai. I'll see you soon, hopefully with the good news as Indian fans. But if this goes the other way, I mean, there will be a lot to talk about for the next
good 8-9 days. Well, thank you so much to all of viewers too for connecting in with us. Enjoy the match, pray for the win, and we'll see you after the result or during the tea session, whatever happens first. Thank you so much and have a nice day. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।